वो भी हम इस न्यूक्लियर चार्ज को किस नाम से जानते थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
बट जो फाइनल आंसर है वो इसके साथ नहीं जाता। फाइनल आंसर में अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना हो, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, we see that order of screening effect, तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की स्क्रीन होती है दैट इज एस, देन आफ्टर पी, देन आफ्टर डी, देन एफ, सबसे पीछे जाएगा आपका फिर ऐसे जी। सबसे बेस्ट क्वालिटी स्क्रीन इज एस, देन पी, देन डी। Got it? Now, when we talk about the skinning effect, we can see here in S the best quality screen, then after P, then after D, then F, then G. Why the D is better screen? There is a question, why the D is better screen? तो आपको क्या बोलना है कि it may be S, or it may be P, or it may be D. In any orbital, you cannot keep, got it? You cannot, यहां से अगर हम देखते हैं ना, तो it may be S orbital, it may be P orbital, or it may be D orbital. You cannot keep more than 2 electron. Got it? तो नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हमारे पास एस सबसेल या मे बी पी सबसेल, पी में क्या पंगा था, वी आर हैविंग इन 2 lobes ऑन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग बेटर होगा, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इन 4 लोब। आपको बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू बी इन 2 लोब इज बेटर, और 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इन 4 लोब। Two electron going in 2 lobe, or 2 electron going into the 4 lobe. Obviously, your answer will be 2 electron 2 lobe में क्या होगा, electron density will be more. जो डबल डम्बल है उसमें देखने में तो स्पेस इज बिग, that is the little bigger, but finally if we see that keeping 2 electron in 2 lobe is better than 2 electron in 4 lobe. ये 4 lobe देखने में बड़े हैं बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चॉकलेट 2 लोग मिलके खाएगा तो उसको ज्यादा थोड़ा मिलेगा, 2 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 लोब्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 लोब्स, बट यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इन 4 लोब्स। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी लो। आपको घर में पर्दे लगाने हैं, पर्दे के कपड़े फिक्स है, पर्दे हम जितनी बड़ा लगाएंगे वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। व्हाट इट, व्हाट इट, यहाँ पे 4 लोब्स में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ये उतना स्ट्रांग अच्छी क्वालिटी का पर्दा हम नहीं मानते। सो पी इज बेटर देन डी, पी इज बेटर देन डी। व्हाट इट, चलो यहाँ तक की हमने बात कर ली। फिर आगे हमने एक छोटा सा फार्मूला सीखा था कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस स्क्रीनिंग। इट मीन्स अगर ये कम है, इफ इट इज गोइंग टू बी लेस, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर। इफ स्क्रीनिंग इज पुअर, वी कैन यहाँ बिल्ड ए कॉन्सेप्ट दैट इफ स्क्रीनिंग इज पुअर, अगर स्क्रीनिंग कम है, इज पुअर, then
इसका क्या इफेक्ट आएगा? जेड इफेक्टिव विल बी मोर हाई, व्हाट इट, सो फाइनली radius will be less. Radius will be less. Size is going to be decreased. Size इसकी क्या होगी बेटा? Decrease हो जाएगी. So then what happens in case of that? The question was that why the size of aluminium और गैलियम की बात करें, गैलियम की साइज एल्युमिनियम से छोटी क्यों थी? तो चलो अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं. Let me are of aluminium. This is very important question. Aluminium atomic number is 13. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 then 3p1. बट एज सुन एज एल्युमिनियम से हम गैलियम की तरफ शिफ्ट करेंगे, वी आर गोइंग फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम. मेरी गलियों में तेरी गलियों में ना आए दोबारा, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं. तेरी गलियों में ना आए दोबारा, तो गैलियम आ गया. गैलियम में क्या प्रॉब्लम आती है? गैलियम कहता है मेरा मकान तो 4 BHK है, एल्युमिनियम का घर कैसा 3 BHK, बट गैलियम की बात करें 4 BHK. बेवेर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि गैलियम की साइज एल्युमिनियम से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपन 1s2 2s2 and then after 2p6 2p6 later on 3s2 then 3p6 3d10. This is the problem, this is a very important even you can see here. ये 3d10 have very poor screening. This has very poor screening. Got it. तो स्क्रीनिंग इसकी पुअर है तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो कि एक टग ऑफ वार, आपने सुना होगा टग ऑफ वार होता है, दोनों साइड में दो मेंबर्स होते हैं. गॉट इट. दोनों साइड में रुक जा, ओटेड है, ओटेड हो गया. गॉट इट. तो इसमें हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो, अगर इस साइड में पहले क्या था, यहाँ पे देखो 31 मेंबर्स, यहाँ 31 मेंबर यहाँ बैठा लो, 31 प्रोटॉन पॉजिटिव, यहाँ पे थे 31 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. अगर ये सिचुएशन नॉर्मल होती तो साइज इसकी बढ़नी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे आउट ऑफ 31 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन दे चीटेड. वो बोलते नो आई एम टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू पुल योर थ्रेड्स. ये ना टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते. इन्होंने स्क्रीनिंग किया ही नहीं, नो स्क्रीनिंग. इनकी स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर है. तो 31 मेंबर में से अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तो देयर विल बी इन दैट साइड ओनली देयर इज इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यू कैन इमेजिन इट, ना. अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचते कितने हैं, इसको हम कट कर देंगे. फाइनली वी आर हैविंग 21 इलेक्ट्रॉन. तो 21 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी स्ट्रांगली पुल बाई 31 प्रोटॉन. दिस इज द प्रॉब्लम, finally size of atomic size is going to be decreasing order. तो हमें रीजन, this is the reason why the atomic size of gallium is smaller than aluminum. Why the atomic size of gallium is smaller than aluminum? Okay, so now what is the final answer? यहाँ एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय +18 यूनिट. एज वी गो फ्रॉम aluminum to gallium, nuclear charge
increases by plus 18 units. Number of proton 18 unit बढ़ गए, but due to poor screening, due to poor screening, due to poor screening of D10 electrons, D10 electrons, poor screening of D10 electrons, Z effective क्या हो जाएगा बेटा? That is high, very high. So atomic size decreases. The contraction in atomic size takes place. Atomic size of gallium decreases. This is the overall answer. Now we will discuss that about the ionic radii. What is ionic radii? Ionic radii, got it? When we talk about the ionic radii, then what will happen? Ionic radii. Then in case what the ion actually, मेरे पास अगर यहाँ पे सोडियम एटम है, atomic number is 11, mass number is 23. When you write the electronic configuration, there will be 2, 8, 1. So you can observe that it is having 3 orbits, k cell, l cell and m cell. As soon as अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, तो there is a formation of Na positive. Number of orbits remains only 2, k cell and l cell only 2, 8. So what happens actually in this case? This is the neutral atom because यहाँ तो कोई charge है नहीं, तो हम बोलेंगे this is a neutral. But this is your cation. This is your cation. Maybe compare, then what you will observe. Size of cation is going to be decreases, So during the formation of, cation from any neutral atom, यहाँ पे लिख लेना है. During the formation of cation from any neutral atom, ionic radii, radii always decreases. Radii always decreases. Now the question is why. यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि why, ऐसा क्यों हो रहा है? आयंस केटाइन की रेडियस नॉर्मल एटम से छोटी क्यों हो जाती है? तो आयनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस यहाँ पे पढ़ना है आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई पी रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन के रेशियो पे डिपेंड करेगी. इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, नो डाउट. अगर हम कंपेयर करते हैं सोडियम वर्सेस Na+, then what happens in this case? Check in both case. In case of sodium, in case of sodium atomic number is 11. The electron is going to be 11. And number of proton also going to be 11. 11 by 11 means it is going to be 1.
But in case of Na plus, what will happen? One electron is going to be less. यहाँ से यहाँ जाने पे एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, तो number of electron is going to be 10, but number of proton is going to be 11. See the fraction. 10 by 11 is a smaller fraction than 11 by 11. 10 by 11 is nearly 0.9 something, or this is going to be 1. So 10 by 11 is going to be a little smaller value. What it? So now we can see that आयनिक रेडियस की बात करेंगे. E by P रेशियो हमें निकालना है. न्यूट्रल एटम में व्हाट एक्चुअली हैपन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल, so there is no change in the size, normal trend होगा. But as soon as we are going to make a positive ion, one electron is going to be less. इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर कम होगा तो प्रोटॉन इज गोइंग टू बी मोर इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. इस केस में यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, बट अपोजिट साइड में ओनली देयर इज a 10 इलेक्ट्रॉन. तो 11 प्रोटॉन will pull all 10 electron more strongly. Finally size is going to be reduced. और अब अगर निकालना चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि दोनों केस में अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव इज गोइंग इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है. न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीज. And if there is a during the formation of anion, हमारे पास फ्लोरीन एटम है, एटॉमिक नंबर इज 9, configuration is going to be 2,7. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर चेक करते हैं तो इसके बाद न्यूक्लियस होगा. दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन. तो इट वाज हैप्पी विद हिज फैमिली, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे.
And later on there is a 2 plus 2 4, then 2 6, 1 7 electron. Initially what happens? There was 9 proton for 9 electrons. तो things were managed, properly managed यहाँ पे था. लेकिन अगर हम इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, तो 9 प्रोटॉन कैन कंट्रोल ओनली 9 इलेक्ट्रॉन. जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो दैट इज व्हाई साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ऑर्डर. साइज इसकी बढ़ जाती है. तो रीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, अर्लियर यहाँ पे हमारे थे 2 plus 2 4, 2 6 and 1, यहाँ पे 6 7 इलेक्ट्रॉन. 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन केम हियर, जिसकी वजह से यहाँ -1 चार्ज आएगा. 9 प्रोटॉन is going to be for 9 electron earlier, but अभी जो हमारे पास है fluoride ion, you can see that there is 10 electrons for 9 proton. 9 proton 9 electron को bind up कर सकते हैं, but 1 electron is going to be extra, and that is going to responsible for increasing the size of this fluoride ion. E by P रेशियो निकालते, अगर इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे तो here we are getting 9 by 9. I hope, is it? Now the Taran is there, Taran, good evening. Now we can see that 9 by 9 is going to be 1. Here we can say we are having 10 out of 9. To compare these two fractions, 10 by 9 is bigger than 9 by 9. So finally size is going to be increased. During the formation of negative ion, size always increases. Got it? Now I will give one question, let's see that who will be going to reply, who is going to reply that, the question is that, the question now, this is the question of, ये क्वेश्चन नंबर आते है ना, 1 चॉकलेट. ये तो चॉकलेट ही क्वेश्चन है. अभी चॉकलेट बहुत महंगा वाला नहीं रखते. वी आर गोइंग टू कीप ओनली 5 रुपीज. वाह, कितना देखो बहुत प्राइस मनी वाला चॉकलेट है. व्हाट इट. और ये 5 रुपए वाला क्वेश्चन है. देखते हैं कौन बढ़िया बना पाता है. वी आर हैविंग सम आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, हमारे पास है Na+, then we have fluoride ion, then we have O-2, then we have N-3, then we have Mg+2, then aluminum tripositive ion. And what will be the correct order of radius? आपको इसमें बताना है what will be the correct order of radius. Correct order of radius. What will be the correct order of radius? What will be the correct order of radius? Let's see who can reply, You can send the reply on the WhatsApp or in the live chat also. It is a fun. Edit video now. Message. I'm waiting for the final response. Do fast. Who's going to be the winner? Display.
What is the correct order of ionic radii in the given ion? Write the correct order of correct इंक्रीजिंग ऑर्डर हम ले लेते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ionic radius one is do very fast. Atomic number of sodium is 11. It's 9 and it's 8. This is the 7 and this is the going to be 12. It's going to be 13. Okay. Now I'm giving the final answer and we will check the response, what the final answer is going to be. Waiting for the final response. Let's hope,
Okay, now we are going to have, correct answer. So correct answer is going to be सबसे छोटा रहेगा aluminum tripositive N. Then after we are having, Mg plus 2. Then later on you are having Na plus. Then after fluoride ion. Then उससे bigger होगा O minus 2. And more bigger than N minus 3. I hope Taran has given, fastest response. Oh, the final answer came, of that, more the negative, more the size, more the positive, smaller the size. It's very simple to identify, because all are isoelectronic. All are isoelectronic. सारे में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग सेम है. All are isoelectronic. Got it? Now in this case you can see that, in case of aluminium, अगर हम E by P का रेशियो इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, E by P की रेशियो बात करेंगे. Here we are having 10 by 13. Here we are having 10 by 12. Here having 10 by 11. Then this is going to be 10 by 9. They're going to be 10 by 8. This is the 10 by 7. You can see it. Denominator सबके different है, numerator common है. तो न्यूमरेटर सबके सेम है. डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस फ्रैक्शन आल्सो. ई बाई पी का रेशियो भी इसी ऑर्डर में चल रहा है. ई बाई पी का रेशियो जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ऑर्डर. गॉट इट? So this was the first question. Now I will give the, now another topic is अभी क्वेश्चन में जो पोल की तरफ में क्वेश्चन डाल दूं. the question number 2. Which of the following largest size? Option A, that is S minus 2. Option B, that is aluminum plus 3. Option C, that is calcium plus 2. And option D, Cl minus 1. Cl minus 1.
हाँ हो गया क्वेश्चन बन गया 10 रुपीज चॉकलेट डाल दिया क्वेश्चन आपको देखो क्वेश्चन इधर आ गया होगा ना s minus 2 आंसर No, send your answers on the WhatsApp or on the chat. Do fast. Again, Jason has done very fast. Jason. Now the winner is Jason. S minus 2. Al plus 3 and Ca plus 2 and Cl minus 1, and which have the highest atomic or ionic size. So largest size is going to be that, more the minus, more the size. Very simple to identify, आपको बस इतना simple सी बात देखनी है. Minus कहाँ पे ज़्यादा है? This is going to be minus 2. And here we are having minus 1. And this is having plus 3 and this is having plus 2. Now sulfur, अगर हम बात करेंगे तो सल्फर का जो नॉर्मल बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, तो ये हमारे पास कैल्शियम है जो कि हमारे पास दैट बिलोंग टू फोर्थ पीरियड. बट इफ यू सी द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 16 प्रोटॉन. And if you check the another case, this is a 10 electron divided by 13. This is going to be 18 electron divided by 20 proton. Last one is the 18 electron divided by 17. Our answer will be between these three. इसमें और इसमें से आंसर होगा. Look at these three, all are having electron is going to same, but proton is different. जिसका proton कम होगा उसकी size बढ़ जाएगी. Your final answer is going to be the S minus 2. Now we can go with the next, or that is the, what is the covalent radius? What is the covalent radius? When we talk about the covalent radius, then so as we know that what is the covalent bond? Covalent bond is formed by the mutual sharing of electron between two atoms. This is the one of the hydrogen atom. This is the K cell, and this is the radius. And here we are having another hydrogen atom. This is the nucleus, and this is the cell. This is again K cell. Now, if they are going to share their orbits, अगर इनके orbits की हम sharing कर लेते हैं, then what will happen? There is a formation of covalent bond. At the time of covalent bond formation, both of them are going to share their electrons. Electron की तो sharing होनी है, but at the same time, their orbits are also going under the overlapping.
their orbits are also going in overlapping. So after the overlapping, you will see that, like this. Now what happens? Some of the area is common. This is the nucleus. This is the nucleus. But this area is going to be common for both. Now the distance between the nucleus, इनके बीच का जो distance होगा, that cannot be taken as 2r. इसको हम 2r नहीं ले सकते. Got it? आप एक रियल एग्जांपल ले सकते हो. सपोज दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर पॉइंट. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, सपोज दिस आर इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर. दिस इज द अनदर सर्कल. उसका भी सेंटर ऑफ सर्कल से यहां तक की जो रेडियस है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर. बट अगर हम दोनों सर्कल को ओवरलैपिंग करा दें, आफ्टर द ओवरलैपिंग यू कैन नॉट से दैट स्टिल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर. आप ऐसे नहीं बोल सकते. तो ये जो हम ओवरलैपिंग कर देंगे, तो इसके बीच की नेट डिस्टेंस कैन नॉट बी 8 सेंटीमीटर, विल बी स्लाइटली लेस. अब ये जो नेट डिस्टेंस है, दिस मे बी मे बी 6 सेंटीमीटर. तो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज सम एरिया इज अंडर द कॉमन. ओवरलैपिंग कर दिया हमने. तो फाइनली सिमिलर टू दिस, this is the covalent bond length. This distance is known as covalent bond length. Let the covalent bond length is going to be d. यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं. Then radii covalent will be equal to bond length divided by 2, half of the covalent bond length, half of covalent bond length. So now we can see that, covalent radius is slightly smaller than, atomic size. Radii covalent, radii covalent slightly smaller than atomic radius. And bigger that, this is the anionic radii. Anionic radii is going to more than that. और बेटा अगर केटाइनिक की बात करेंगे तो उसके भी पीछे चला जाएगा, कोवेलेंट से भी पीछे. दस रेडियस ऑफ केटाइनिक. केटाइनिक रेडियई. After this, we are under having that is the van der Waal radius. वैन के डर से वॉल बना लेना है. वैन डर वॉल, वैन के डर से वॉल. व्हाट? वैन डर वॉल रेडियस. वंडरफुल रेडियस की जो स्टोरी है, दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट, कि हमारे मकान और पड़ोसी के मकान के बीच में क्या रहता है? डोर. वहां पे एक स्पेस होता है. तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू हाउस. ये जो गैप होगा, लाइक इफ यू टेक हीलियम एटम, हीलियम एटम इज लाइक दिस, यहाँ पे बैठा हुआ है. इसके नियर बाय में दूसरा हीलियम एटम आया, बोलता भाई तू मेरे से दोस्ती कर ले. बोलता आई विल नॉट मेक एनी फ्रेंडशिप. इनके बीच में कोई फ्रेंडशिप
नाउ द वंडर वाल रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो these are the two atom in both are the noble gases. They say that we can't be friend of each other, but still अगर हम इसको कंप्रेस कर दें और बहुत ही लो टेम्परेचर में रखें तो ये गैस को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, व्हाट इट। तो वंडरवाल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वंडरवाल ने कहा कि even between the gaseous molecule force of attraction is very poor but force of attraction is there. अगर हम दो एटम को क्या करेंगे, we are going to brought them closer, अगर हम उनको पास पास लाते हैं तो they will be they will come very close but एक appropriate distance पे आके वो रुक जाएगा, because they are not going to sharing तो ये करेंगे नहीं, बिकॉज देयर डुप्लेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, केएसएल की अकोमोडेशन 2 इलेक्ट्रॉन की होती है वो पहले से यहाँ पे, तो दे आर नॉट रेडी फॉर शेयरिंग एट ऑल, गॉट इट। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, ये भी पेयर्ड है, कहता आई एम ऑल्सो पेयर्ड। ये बोलता है मैं शादीशुदा, कहते हैं मैं भी शादीशुदा, कहता फिर हम लोगों का कोई दोस्ती नहीं बन सकता, कहते कोई बात नहीं, बट हम लोग पड़ोसी तो बन ही सकते हैं। तो इनमें क्या पंगा रहता है कि अगर हम किसी कंटेनर में इनको रख देते हैं दे विल कम इन क्लोज बट दे आर नॉट सो क्लोज, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहे। लाइक नेबर्स, ये हमारा एक हीलियम एटम है, इसका न्यूक्लियस यहाँ रहेगा, नियर बाई में दूसरा न्यूक्लियस एटम, दूसरा हीलियम एटम, उसका न्यूक्लियस यहाँ रहेगा, लाइक नेबर्स रहेगा, बीच में गैप भी रहेगा, यू विल गेट हियर दिस इज द गैप, स्मॉल गैप इज देयर बिटवीन देम। नाउ इनके न्यूक्लियस को सेंटर मानते हुए हमें एक नया सर्कल ड्रॉ करना रहता है, लाइक दिस वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू सर्कल हियर, लाइक दिस we have to draw a new circle including the nucleus of this two। आप एक नया सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और एक यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वंडरवाल डिस्टेंस, और दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वंडरवाल। तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस आ रही है इस डिस्टेंस का नाम था वेंडरवाल, वेंडरवाल गैप और वंडरवाल डिस्टेंस, वेंडरवाल डिस्टेंस और वंडरवाल गैप। लेट दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डी, इसको डी मान लेते हैं। तो नाउ रेडियस वंडरवाल की अगर हम बात करेंगे, रेडियस वैंडरवाल, वैन के डर से वॉल बना लिया, तो दैट इज गोइंग टू half of the वंडरवाल डिस्टेंस, half of d, half of the वंडरवाल डिस्टेंस, got it। और दिस इज ऑलवेज बिगर, यू कैन सी दैट बिकॉज यहाँ पे गैप भी इंक्लूड होता है, तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बिगर देन द एटॉमिक रेडियस। तो दिस इज द फाउंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये जिम्मेदारी लेता है कि गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमेशा ज्यादा होता है, वंडरवाल गैप लिक्विड मॉलिक्यूल में थोड़ा कम होता है, but this is everywhere, this force of attraction is found everywhere। Now tomorrow we will discuss another topic, like ionization enthalpy, electron affinity and electronegativity. We will discuss this 310 tomorrow, next class। Have a nice day, good day and good night।